और इसके electrons further repel होंगे. This is nucleophilic addition that's happening. तो ये उसी का part है of nucleophilic addition. और अगले step में O-1 जो बनेगा that would attract the H+1. इसको बड़ा कर देते हैं. अच्छा ठीक है. Eva, is this clear? Yes. अच्छा उसके बाद है कि मतलब अभी तक हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स में क्या किया कि we studied के they undergo nucleophilic addition. That's it. अच्छा then there's another thing which is कि when you have aldehyde and ketones, there's a test for identifying both of them. And that's called a 2,4-DNPH test. The reaction with 2,4-DNPH. The other name of this substance is 2,4-dinitro. Phenyl hydrazine. Okay, that's the other name. So what is 2,4-DNPH? It's a test for identifying carbonyl group. Carbonyl यानी दोनों को आइडेंटिफाई करेगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. ठीक है, तो ये दोनों को आइडेंटिफाई करेगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. Test for identifying carbonyl group. And what happens in this carbonyl group is K24DNPH is this thing. Now this is your 2,4-DNPH molecule. And if you have an aldehyde or a ketone, तो उसमें ना it has serial bond O, आगे H है या R है, whatever it is. ठीक है, so this is your, ऐसे दोनों करीब जाएंगे and they would start reacting with each other. इसका कलर चेंज कर लेते हैं, make it pink as well. अच्छा, they would start reacting with each other. इसका H और इसका a condensation reaction happens, and this ends up forming water. और आपका बाकी जो reaction है that is कि डबल बॉन्ड पीछे रह जाएगा. तो दैट डबल बॉन्ड over there, ठीक है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो जाके बॉन्ड कर जाएगा N के साथ on the other side. Anyways, it would result in the formation of this molecule. ठीक है, so this molecule over here is going to be, it's going to be produced after this reaction.
तो इट्स अ टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग एल्डिहाइड इन कीटोन्स, दोनों के साथ सेम रिएक्शन होगा, ऑब्जर्वेशन होगी, एन ऑरेंज प्रेसिपिटेट वुड फॉर्म। डिसएडवांटेज इस टेस्ट का ये है कि इस एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों को एक ही तरीके से आइडेंटिफाई करता है, सो यू कांट रियली डिफरेंशिएट बिटवीन एन एल्डिहाइड एंड अ कीटोन। तो ये मैं फिर से रिपीट कर दूं कि इसको पहले एक सेकंड थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें। अच्छा इमेज, ये दिस इज योर रिएक्शन विद 2,4-DNPH। सिंपली याद रखना है कि 2,4-DNPH होगा and the result would be positive for aldehyde and ketones both. Sometimes you might be asked to give an equation, तो ये reaction होगा कि there's going to be a ketone और वो जाके ना 2,4-DNPH के साथ react कर सकता है, ठीक है। लेकिन most of the time you'll just be asked के test किया भाई aldehyde और ketones का, तो आप कहोगे 2,4-DNPH डालो, you get an orange precipitate. Reba, is this clear? Yes. अच्छा, this pretty much carboxylic acid रहता है, हम syllabus भी खोल लेते हैं साथ ही, one second. मेन हमने सारा ऑर्गेनिक जो है वो कवर कर लिया। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बहुत थोड़ा सा है, विच विल जस्ट कवर, देखेंगे कि क्या क्या मिस हुआ है। ये एस्टर्स हम पढ़ चुके हैं, एसिड्स के रिएक्शंस पढ़ने, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। चलो डिस्क्राइब द, ये भी हम कर चुके हैं, ये भी हमने किया था कि इससे पिछले पार्ट में रिडक्शन के अंदर व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट रिडक्शन, तुमने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे require LiNH4 and they get reduced. एस्टर्स भी पढ़ चुके हैं सेकेंड पार्ट, ये रिएक्शन ही रह गए। नाइट्राइल से एस्टर बनाना है वो भी हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, एल्डिहाइड और कीटोन्स में क्या रह गया? अच्छा, वी डिड मोस्ट ऑफ इट, ये सारा तो हम कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हमने पहले कर लिया था। और क्या रह गया? 2,4-DNPH, दैट्स आल्सो डन। बस ठीक है, सिर्फ ये रह गया कि एक हम आइडोफॉर्म टेस्ट कर लेते हैं, which I think we might have done. अच्छा, ये भी ना, कैन आई गिव यू सम वर्क, क्योंकि मेरा गले में दर्द शुरू हो गया दोबारा बोल बोल के। Okay. ठीक है जी भाई, I'm going to send you I'm going to send you some work, ठीक है। ये एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड, जस्ट वन सेकेंड।
अच्छा मैं व्हाट्सएप पे भेज दूँ, ठीक है? Okay. अच्छा open this this one here. अच्छा इसकी कोशिश करो कि try the notes are in front of you. Try and attempt. इसमें डबल बॉन्ड कुछ मिसिंग हो गए, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं. वो कह रहा है कि it is neutral, gives an orange precipitate with 2,4-dinitrophenylhydrazine. तो ये 2,4-DNPH का टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि it's an aldehyde or a ketone. तो it's either B or C or it could be A as well. एक second, what's wrong with the sheet? मैं डाउनलोड करता हूँ. This one. And it says that HCl is evolved when it's treated with PCl5. So it's either an aldehyde or a ketone. ये यहाँ पे bond है, ठीक है, which you probably can't see. Misprint हुआ हुआ है. This is an ester. ये O और serial bond O अगर इकट्ठे होंगे ना, so that's an ester. Just 1 second. अच्छा ईबा एक काम करो कि आप ना ये सॉल्व करने की कोशिश करो और देखो कितने होते हैं आपसे, ठीक है? Okay. Try doing it till page 5. सही है, नोट्स उधर साथ पड़ेंगे. Okay. मेरे से व्हाट्सएप पे ना आप पूछ लो कि कौन कौन से नहीं हुए, उनके आंसर्स मुझे भेज देना, ठीक है? All right. चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज. Thank you.